Okay, start. Yes. Welcome to the structure of atoms. In a structure of atom, we earlier lecture we have to discuss about the what is the atom. Atom is the basic constituent part of the element, basic constituent part of all matters. Atoms are present in everywhere. All matter are made from atoms. What I say? All the matter are made from atoms. Atoms are basic constituent particles of matter. So atom, which is individual chemical identity. Atom has individual chemical identity, and atoms are when atom discovered, the atoms are made from some subatomic particles like electron, proton, and neutron. So in first structure of atom, we have to discuss about the discovery of electron, how electron is discovered. In earlier days, Michael Faraday showed that like charges are repelled to each other and unlike charges are unlike charges attract to each other. Like charges, which is repel to each other, the force of repulsion. So earlier days, Faraday's, which is shown has experiment the like charges and unlike charges. The charges are made from charges are two types. The charges having two types, a positive charge and negative charge. So ultimately positive attracted toward the negative and negative charge attracted toward the positive charge. And the positive charges, positive charges, there is a force of repulsion, and the negative charges, there is a also force of repulsion. So unlike charges are attract to each other and like charges are repelled to each other, which is the basic fundamental things we have to discuss earlier lectures. So discovery of electron, very interesting things, and very basic particles is the electrons. All the matter are made from electrons. Basic things, discovery of electron, which is make very great things. जो भी हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ये बहुत बड़ी बात है हमारे एंटायर साइंस में. Discovery of electron, ये basic things. So the positive and negative charges, it is also here a cathode ray tube experiment, very simple experiment carried by the scientists, cathode ray tube experiments. Why we call a cathode ray? Because of a plate, two plates we have, two metal plates, one plate and this another plates. We have to a clear picture draw. The one this plate which is connected to negative terminal of battery. So it is called cathode plates. The plate which connected to negative terminal of high voltage battery, it is called cathode plate. Then another plate is here anode plate. Anode plate which is connected to positive terminal of battery. Anode plate connected to positive terminal of battery, which is called anode plate. Okay, so it is a high voltage battery, high voltage power supply. And here look, inside this tube very low pressure, that means you decrease the pressure. Gaseous, you can remove some of gaseous. अगर इसमें थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर का गैस है तो हम उसको थोड़ा कम करेंगे, रिमूव करेंगे. सो द प्रेशर ऑफ दिस ट्यूब, दिस ग्लास ट्यूब, यू हैव टू डिक्रीजेस टुवर्ड द वैक्यूम. वेरी लो प्रेशर, high tension battery, high voltage and very low pressure. Look, this experiment is conducted to very low pressure and very high voltage power supply. So why we reduce the pressure? Because the atoms, the gaseous present, ये इनमें जो गैस प्रेजेंट होगा वो इंटरप्ट ना करे, इसलिए हम इसे प्रेशर जो है वो बहुत कम करेंगे and increase the voltage. Then the experiment setup, you have to first understand how experimentally you have to set this experiment. Look, a glass tube having two plates. One is positive plates, another is negative plates. One is positive plates, which is called anode, which is connected to high voltage battery. Another is negative plate, which is called cathode, which is connected to negative terminal of battery, high voltage battery. Then look, when you power supply, you have to on the power supply. At that time, what happened? This negative plates emit some particles. We don't know it is a positive or negatives. We have to say this plates which is emit some particles. ये plate जो है वो particle emit करेंगी. Why this emit the particles? Because of it has very high voltage, and यहाँ पे ये particle, because of this particle having it is called cloud of electron. ये इलेक्ट्रॉन के cloud of electron, a group of electron is emitted and goes toward the anode. This is a basic fundamental experiments. What we can do here, look,
here the very simple experiment, nothing is that. One, you have to be a glass tube, and in this glass tube having very low pressure, and which a plate, two plates which is connected to battery, very high voltage battery, cathode plate which is connected to negative terminal of battery, and anode plate which is connected to positive terminal of the battery. Then the experiment, when you have to be a cathode plate which is emitted a electron like particles, some particle, and we have to detect it here. Again another tube, similar tube, but here only perforating. Perforated means उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, जालीदार, जालीदार, ऐसा हम इसमें perforated which is the hole. And this emitted particles, when you on the supply is on, then a plate, this cathode plate emit a charged particles, and this charged particle goes towards the anode terminals. Anode, here this charged particle goes toward the anode, and after passing through this perforated anode, if this particle are strike here, this particle, this electron or negative particle strike here, and this Zn zinc sulfide screen, it is a fluorescent screen. That means ये क्या होगा, जब ये particle यहाँ से निकलेंगे, it is a negative charge particles and goes toward the positive plates, because positive negative are force of attraction. So ये जो particles है, negative particles which is travel some distance and goes inside and goes towards the screen, and when this particle, this negative charge particle strike on the screen of zinc sulfide, so it is a glow. We have seen a glow. यहाँ पे हमें ये चमकेगा, ये जो स्क्रीन है ये ग्लो हो जाएगा. और क्यों वो ग्लो हो जाएगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन. फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या है कि जब हम उसके कोई पार्टिकल, अगर उसमें ये पार्टिकल दिखते, इट इज इनविजिबल पार्टिकल है, लेकिन ये कैसे इनविजिबल है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं? तो इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से हमें पता चलेगा कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं, और एक सम ग्लो, यहाँ पे ये चमकेगा, यहाँ पे ग्लो दिखेगा हमें, तभी पता चलेगा कि ये पार्टिकल, व्हेन दिस पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ग्लो, सो वी हैव टू से द electron can emitted or rays is emitted by a cathode plate. ये cathode plate कुछ तो भी रे emit कर रही है, और ये रेस यहाँ से पास होकर परफोरेटेड एनोड से पास होकर इस स्क्रीन पर स्ट्राइक कर रही है, और ये जो स्क्रीन है ये ग्लो कर रही है. ओके, सो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट. एक हमारे पास ग्लास ट्यूब है, एंड ग्लास ट्यूब में दो प्लेट्स है, एक कैथोड प्लेट है, अनदर इज एनोड प्लेट है. एनोड प्लेट इज अ परफोरेटेड स्क्रीन, वैसे थोड़ी जालीदार, जलापन हिंदी में जाली वाली एनोड है, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज विच इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज बैटरी. एंड दिस स्क्रीन इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज व्हाई, व्हेन दिस रेज आर इनविजिबल, ये जो रेज है ये इनविजिबल है, तो ये विजिबिलिटी हम कब पता चलेंगे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, नो डाउट हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया तो कैथोड से रे निकलेंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेंगे? जब वो रे, ये पार्टिकल जब यहाँ इस स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे और ये स्क्रीन ग्लो करेगी, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ से पार्टिकल निकल चुके और यहाँ तक पहुंच चुके हैं. एंड this Zn zinc sulfide screen start to glow. Okay, it is all about this perforated cathode perforated anode tube experiment. Then we go towards the results. What results obtained from this experiment? So results. Okay, हमने देखा कि प्लेट से कुछ तो पार्टिकल निकल रहे हैं. ओके, एंड द प्लेट, वो प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. द प्लेट विच कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. सो व्हाट वी कैन से, अ रेज इज इमिटेड. सो अगर वो कैथोड से निकल रहे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? कैथोड रेज. यस, which is emitted from cathode, so it is called cathode rays. And it is about, we can say, cathode rays, cathode ray emitted from cathode plate, emitted from cathode plate. Yes,
cathode, the rays which is emitted from cathode, so it is cathode plate called cathode ray. उन्हें क्या कहेंगे हम? called cathode ray. Cathode ray. Cathode ray which is emitted from cathode plate which is called cathode rays. And second one, वो emit हो रहे थे लेकिन वो कैसे travel कर रहे थे? They are traveling, वो some distance travel कर रहे थे. So the cathode ray, second one, cathode ray, they travel in a straight line. In a straight line. They travel in a straight line. Cathode ray, they travel in a straight line. Okay, so which is वो travel करने के लिए वो एक सीधे लाइन में travel करेंगे. Second, third one, another one is yes, ये अगर ये रेज निकल रहे और वो कैथोड प्लेट से निकल रहे और वो ट्रेवल कर रहे अगर हम उनके पाथ में, अगर हम कोई भी उनके पाथ में कोई भी प्लेट नहीं लगाई, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट नहीं लगाई, इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इन अब्सेंस ऑफ, वो कैसा कहेंगे हम? इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड magnetic field, they travel in a straight line, they travel in a straight line. अगर हम उनके पाथ में कोई भी इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेंगे. ये भी उनकी एक प्रॉपर्टी है. देन अगर हम उनके पाथ में, फोर्थ प्रॉपर्टी आएंगे, अगर हम उनके पाथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो वो एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. अगर हम उनके पाथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो वो एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. दे शो डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स इट हैविंग अ चार्ज. उनके पास क्या है? चार्ज है. अगर हम उनके पाथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. यस, नो डाउट, इज डिफ्लेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट. ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. व्हेन in presence of electric field, in the presence of electric field, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, they deflected cathode rays, they deflected towards anode plate, or we can say positive plates. So they have negatively charged. Yes, अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, it has containing negatively charged. Cathode ray which is deflected towards the positive plate, definitely it means it contains negative charge. Next property, again another property we have to say, which one numbers of property? This fourth, fifth number properties. ये कैथोड रेज उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, दैट मीन यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ cathode ray particles do not depends upon the material of electrode. Do not depends materials of electrodes. देखिए, हमने वो जो प्लेट्स ली थी, कैथोड प्लेट्स, वो किस मेटल की ली है? इंडिपेंडेंस. वो मेटल कौन सा भी ले लो आप चाहे तो कॉपर मेटल, यू हैव टू टेक अ कॉपर मेटल, देन यू हैव टू टेक सिल्वर मेटल, गोल्ड मेटल, कौन सा भी आप कोई भी एनी ऑफ मेटल यू हैव टू टेक, एंड द प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट. कौन सा भी आप मेटल ले लो,
वो डू नॉट डिपेंड, द मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी उस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगी। हर एक प्लेट विच इज कैथोड रे इमिट ही करेंगी, हर एक प्लेट विच इमिट द पार्टिकल्स, ओके, दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। देखिए, देन लास्ट वन, अगर हम प्लेट्स बदलेंगे, कैथोड प्लेट्स अगर बदलेंगे, पहले हमने कॉपर की ली, फिर एल्यूमिनियम की लेंगे बहुत सारे मेटल्स से, फिर सोडियम मेटल्स की प्लेट्स लेंगे और पोटेशियम मेटल्स की प्लेट लेंगे एक्सेट्रा, और कई मेटल्स की हम ले सकते। तो हर एक प्लेट से वही प्रॉपर्टी दिखाएंगे, वही इमिशन ऑफ कैथोड रेज। Cathode rays having negatively charged, they travel in a straight direction and they deflected towards the electric as well as magnetic field, and the properties of cathode ray which is independent of metal, वो मेटल पर इंडिपेंडेंट करेगी, डिपेंडेंट नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट है। आप कोई सा भी, whenever you are to take a metals, वो इलेक्ट्रॉन वो कैथोड रे इमिट करेंगे। कैथोड से निकले हुए रेज को हम क्या कहेंगे? कैथोड रेज। हम इस यहाँ पे कैथोड से निकले हैं ये रेज, इसलिए हम उन्हें कैथोड रे नाम दिया, और वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेंगे। ओके, सो यस, cathode rays which is travel in a straight line, okay, it is all about the cathode rays। अब हम ओवरलुक करेंगे। देखिए, हमने क्या क्या देखा था। we have to overlook the structure of atom and discovery of electron. Electron is a very basic constituent particles of atoms. Electron हर जगह present है। There is a matter, there is a electrons. Electron present in every matters. It is a basic constituent particles of matter, electrons. Which is an electron, the charge, basically charge which is characterized by Michael Faraday has experiment, the positive charge, negative charge, and unlike charges means positive charge attracted towards the negative charge, and two negative charges are repelled to each other, two positive charges are repelled to each other. Then next one we have to very simple cathode ray tube experiment. A two plate is there and a glass tube containing two plates having उसमें का गैस कम करो, उसको प्रेशर, जो प्रेशर है वो कम करो, कम से कम प्रेशर रखो, और इसमें जो है ये प्लेट्स जो है ये हाई वोल्टेज बैटरी को कनेक्ट करो, हाई वोल्टेज बैटरी, वेरी हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट करो। The negative terminal connected to cathode plate and positive terminal called anode plates. So there is an emission of negatively charged particle which is travel in a straight lines. It is a cloud of electron, emitted electron, cloud of emitted electron. Then here we just a small adjustment we have to done here. Only the perforated anode you have to is, no doubt it is also anode, but perforated means वो थोड़े it is a hole inside, perforated it is a hole. So emitted electron traveling with inside goes to travel easily and bombarded on the जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे बम्बार्ड होंगे और हमें ग्लो दिखेगा। देखिए, द रेज विच इज इनविजिबल, हमें वो अपने नेत्र आई से नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन अगर हम यूज करते हैं तो हमें पता चल जाएगा बाय द ग्लो, ये कैसे, जब जैसे ग्लो करेगा हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो गए। और हमने देन नेक्स्ट पेज पे हमने प्रॉपर्टीज देखी, दिस properties of cathode ray or results of cathode ray tube experiment. The first cathode ray emitted from cathode plate and called cathode ray. They are traveling in a straight line. In the absence of electric field and magnetic field, they travel in a straight line. The presence of electric field, they deflected towards the positive plates and they have a negative, so they deflected towards the positive plate. So that's why we have to say it is containing negative charge particles. Then again the characteristic of cathode ray which is independence. आप cathode plates किसकी बनाओ, आप कॉपर की बनाओ, आप सिल्वर की बनाओ, आप गोल्ड की बनाओ, which is the cathode ray की प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है, जिस पर डिपेंड नहीं करेंगी। Okay, it is all about the cathode ray tube experiment. Okay, thank you.